नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सबकी में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। हमारे रियल लाइफ हीरोज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको जिस सज्जन से मिलाने जा रहा हूं, उस सज्जन की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आज तक सिर्फ मेरी कल्पना में थी। मैंने किताबों में ऐसी कई सारी कहानियां पढ़ी हैं, फिल्मों में ऐसी कई सारी कहानियां देखी है, लेकिन आज जब मुझे इन सज्जन से मिलने का मौका मिला तो मेरा अपनी अंदरूनी शक्ति और ईश्वर के चमत्कार पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। यह कहानी केरला के एक गांव तेलीचेरी के एक लड़के की है। बचपन से ही इन्हें खेलकूद में बहुत रुचि थी। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सब में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे। एक और रुचि उनकी थी, उन्हें हमेशा यह लगता था कि वो बड़े होकर एक सोल्जर बनेंगे, और सोल्जर बनने के उन्होंने कई प्रयास भी किए लेकिन असफल रहे। आखिरकार उन्होंने अपना ट्रैक बदल लिया और अपनी पढ़ाई कॉमर्स में कंप्लीट की और उसी में उन्होंने मास्टर्स भी कर लिया और कर्नाटका के एक शहर मैंगलोर में एक प्रोफेसर बन गए। इसके बाद उनकी शादी हुई और उनके 3 बेटे भी हुए, जिसमें से 2 जुड़वा बेटे हैं। उनका जीवन बहुत खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उनकी आंखों के सामने उनका पूरा जीवन पूरी तरह से ढह गया और जिसकी वजह से उन्हें और उनके परिवार को कई सारे दुख झेलने पड़ गए। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी उनके परिवार को बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने 35 वर्षों तक अपनी सेवा दी और इन 35 वर्षों में 17 साल अपने पैरों पर खड़े होकर और बाकी के 18 साल व्हील चेयर पर बैठकर उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। इनका नाम है मिस्टर गोपीनाथ। हमने उनसे पूछा कि ऐसी क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन तहस नहस हो गया, तो उन्होंने हमें ये बताया। It was on 11th of July 1994. I was on my bike with my wife going back home in the evening when a coconut tree knocked me down. She was also badly injured and she was hospitalized. We fell in front of an asylum. There was nothing on the road, clean, empty road. We were the only two on the road. From the nearby compound, the coconut tree landed. And she was also injured. And the worst part was my children were very small. The eldest one was in 6th standard, the younger one, twins, in 4th standard. They lost the best part of their childhood. Or else I was with them every day, even early morning in the Maidan, giving them physical fitness training, running around. So I was into sports and games, so they were also following me. Everything ended with that. Initially, life was a hell. But slowly, we compromised with everything, and we now celebrate that day as a turning point in life, and we enjoy that. There are friends who greet me even now on that day. They wish me a new second birthday on that day. Even my doctors. एक अच्छी खासी सुखी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे गोपीनाथ जी और अचानक से यह घटना घट गई। सोचिए कि जहां वक्त बिताते थे अपने बच्चों के साथ, खेलते थे, इतने एक्टिव थे, प्रोफेसर थे, कई सारे काम किया करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाना और जिंदगी पूरी तरह से ढह जाना। दोस्तों, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि क्या परिस्थिति रही होगी, उनकी मनस्थिति क्या रही होगी। तो हमने उनसे यही पूछा कि कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला ऐसी एक परिस्थिति में और क्या उनकी मनस्थिति थी। उन्होंने हमें ये बताया। You know, let me tell you what happened, then only you will know the background for it. From the chest below T4, thoracic 4,
The T4 was broken into pieces, and T5 had a crack, T3 had a crack, and I was totally paralyzed with total sensory loss, and no urine or bowel control, nothing. So I was not able to even move an inch. So you can imagine what will be my mental condition. And I was blank all throughout after the accident. So many days I was in the nearby hospital for 10 or 11 days. The doctor said, we don't want to open up the case because many of them knew me very well. Their children were my students. So they said, we want an MRI to be done so that we can save as much as possible the spinal controls. Money was a big problem. We were told that it will cost a lot. So I had two, three friends of mine who put up an ad in the newspaper, local newspaper, and they opened an account in the bank and made an appeal to the people of Bangalore, especially targeting the students and the parents. Within 3 days, they got the amount was needed. But those days, they said because it was very bad injury and spinal cord was not totally severed, there was some hope there. So not on the road, you have to be taken airlifted. By the time I developed bed sores and all, but I was airlifted to Manipal Hospital on the 10th day. And then went on for 38 days. I was brought back. इस घटना की वजह से गोपीनाथ जी की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो चुकी थी और बिल्कुल ही अनस्टेबल थी। और ऐसी जब मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ये कहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि इसमें कितना ज्यादा खर्च होता है, कितने ज्यादा इसमें पैसे लगते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। और उस वक्त गोपीनाथ जी की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद इतना सारा खर्च कर सके, इतना सारा पैसा ट्रीटमेंट के लिए दे सके। और उस वक्त उनके 3 दोस्त उनकी मदद के लिए दौड़े चले आए और उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड डाली और सारे जो उनके विद्यार्थी थे, उनके माता पिता थे, सभी से अपील की कि गोपीनाथ जी की मदद की जाए। और 3 दिन के अंदर सारे पैसे जमा हो गए जो कि उनकी ट्रीटमेंट के लिए चाहिए थे। दोस्तों, इससे गोपीनाथ सर के बारे में एक बात तो हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उनकी गुडविल कितनी जबरदस्त थी, कितने अच्छे उन्होंने कर्म किए थे कि लोग दौड़े दौड़े आए उनकी मदद करने के लिए। एक बात हमें यह समझ में आती है कि चाहे कुछ भी हो, हमारे कर्म ही हमारे काम आते हैं। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम कई सारे पैसे जमा करते हैं, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट भी होता है जिसमें हम हमारे अच्छे कर्म जमा करते हैं। ये बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अच्छे कर्म हमारी जीवन में सहायता करते हैं। तो ये तो थी आर्थिक स्थिति की बात, लेकिन हमने उनसे ये पूछा कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो अपने आप से क्या बात करते थे, क्या उनकी सेल्फ टॉक रही, तो उन्होंने हमें ये बताया। I was absolutely blank. The entire thing was taken over by my wife. I was totally blank because I don't know what to do. Even if I say yes, I can't find a way out of my present condition to go behind it and get it done. So everything I left to my wife, and she took over. After this spinal cord broke, backbone broke, she is my backbone. Because she has to look after the children, and morning till evening I have to be taken care of. ईश्वर की लीला देखिए, कोई एक बात, कोई एक चीज अगर हमसे छिन जाती है तो ईश्वर हमें और बहुत कुछ उसके सामने दे देता है। इस घटना की वजह से गोपीनाथ जी का छाती से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी उनकी रीढ़ की हड्डी बन गई। उनका ख्याल रखना, उनके बच्चों का ख्याल रखना, सुबह से शाम तक कई सारी चीजें उनको अपने हस्बैंड गोपीनाथ जी के लिए करनी पड़ रही थी, लेकिन खुशी खुशी वो उनको निभा रही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये कब तक इस तरह से चला होगा कि जहां पर
उनकी पत्नी को उनकी देखभाल करनी पड़ी होगी या ये ट्रीटमेंट चली होगी, तो हमने उनसे पूछा कि ये ट्रीटमेंट का सिलसिला कब तक चला, तो उन्होंने हमसे ये कहा। 9 months I was on bed in Mangalore. By the time we luckily got a wonderful God-sent angel like physiotherapist by name Mr. Vinod Abraham. He is now in Dubai in a hospital. He is a director there. He was introduced to me by my neighbor who was in the plant, a medical student. He had just come out of the physiotherapy with a bachelor's degree, but he took over the case. The first thing he said is, I will work on you if you give me a promise that you will, in this condition, go back to the platform and teach. Because with this injury, you can't sit on the wheelchair, you can't leave the hand. I said, how do I leave my hand? That's all I'll teach you. If you are ready, then only I'll come. And we are a very strict condition. When I'm about to fall and all, no family members must come and touch or help. We two only will work on it. Rigorously. He used to even hit me sometimes. Said for you. A young fellow, 24-year-old fellow. And within 6 months, he made me fit first to sit and balance for a short time. By that time, pressure sores had come. And then sit for longer duration. Once I could sit for 4 hours, he approached my colleagues and said, he is fit, why not you take him back? He went and spoke to every problem he discussed with them. And my colleagues and the then principal, they worked on that and then approached the management. Management has got a lot of doctors and engineers in there. All of them were skeptical whether he would continue even if he appoint. It is impossible because urine may leak any moment, bowels motion may leak, and pressure sores are mounting up. He may go on leave. What will we do? But finally they agreed. But this man said, you are not going to take 1 day casual leave. You will take a leave only when you are dead. And that too, I will go and report that he is dead. This tough year, like an American movie you see, army training camp, no, ruthless. But that gave me hope. And then I was into everything what he said, literally I obeyed. And I was fit to sit, take class. And then management people agreed. But he even retained a spare teacher in case I suddenly come out. But I did not. I did not. I took. And initially it was, my subject was accountancy, all numericals. I need board and chalk. So that was an issue initial. So he said, now you shift to theory subjects, business studies theory. And from here, that rolling blackboard, evenings she used to prepare every notes on the board, write the points and all. And then next day, that I'll take it there, hang it on the board, and with a pointer, I used to take class taking theory. But I was not very happy with the theory. I used to do wonderful things with numbers. And then very shortly, within 2 years, we decided to go for an OHP projector. And then rest of the service, it was with accountancy and did wonderfully well. The college started getting ranks, any number of ranks. They were happy with me. And after 2 years, they knew I was being shifted from the car to the ground to the veranda in a very crude way. Steps and all are there. One day, after a meeting, staff and management meeting, one of the management committee members, he is an engineer, he saw the attendant rolling me down the steps in a very, I have even now big rods and all inside. He came close to us and asked, this is the way you daily move around. I said, yes. Why can't you make a ramp-like thing? I said, it's not my property. Next day morning, there was an engineer and the college management, wherever you want. My performance was so good, that year also we had a rank, state rank.
So they said wherever you want. So one where they gave me a place to park where I'm protected with from the rain. Shifting from the car takes a lot of time. Then they gave me another one where to the veranda I have to go to the college office. Then one to the principal chamber. Every arrangement was done, and they did another great thing because I can't sit continuously for a long time. There are days I used to sit on auto rickshaw tire tubes filled with water to relieve the pressure source. Nobody knew it because on that I used to cover it. And they said, okay, you don't come in the afternoon, you come in the morning session. So all my periods, 1, 2, 3, were given to me in the morning. The timetable was readjusted. I finished my class by 12:30 and I come out. So I could afternoon take rest and again have physiotherapy. It was a great thing that the management did. ईश्वर का एक और चमत्कार। दोस्तों, जब भी हम एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं जैसी गोपीनाथ जी की परिस्थिति थी, अक्सर हमने ये देखा है कि हमारा अपने आप पर से ही विश्वास उठ जाता है। गोपीनाथ जी के साथ भी कुछ ऐसी ही बात हुई, लेकिन एक इंसान उनके जीवन में आया फिजियोथेरापिस्ट के रूप में, एक 24 साल का नवयुवक, और उन्होंने गोपीनाथ जी को यह विश्वास दिलाया कि अगर वो उनकी सारी बातें मानेंगे तो वो उन्हें इस काबिल बना देंगे कि वो बैठ सके और अपने हाथों का इस्तेमाल कर सके। गोपीनाथ जी ने क्या किया? गोपीनाथ जी ने उनकी बात को माना, उन पर पूर्ण विश्वास रखा और अपने आप को उस फिजियोथेरापिस्ट के सामने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। हमें सीखना यही है इससे कि देखिए, ईश्वर हमारी किसी ना किसी रूप से मदद जरूर करते हैं। ईश्वर खुद सामने चलकर नहीं आएंगे, लेकिन किसी ना किसी का रूप लेकर हमारे सामने आते हैं और हमारी मदद करते हैं। सिर्फ हम अगर विश्वास रखते हैं ईश्वर पर और ईश्वर के सामने कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, तब यह हो सकता है। गोपीनाथ जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने सारी वो बातें की जो फिजियोथेरापिस्ट ने उन्हें करने के लिए कही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई गोपीनाथ जी की मदद नहीं करेगा। अगर वो गिर भी जाते हैं तो वो खुद उठेंगे या फिजियोथेरापिस्ट उनको उठाएंगे। अगर वो नहीं करते तो उन्हें मार भी पड़ती थी। हमारे साथ भी ये हो सकता है। दोस्तों, कभी जीवन में मार पड़े ना, तो ये मत समझना कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ईश्वर हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका प्रमाण भी है कि आगे चलकर जब गोपीनाथ जी कॉलेज जाने लगे तो उनके लिए कई सारी बातें मैनेजमेंट ने की, जैसे उनके लिए पार्किंग स्पेस दे दिया, उनके लिए रैंप बनवा दिया, उनके सब्जेक्ट चेंज कर दिए, और आगे चलकर उनके लिए एक ओएचपी प्रोजेक्टर भी ला दिया ताकि वो अपने पुराने सब्जेक्ट पर वापस आ सके, जो कि उनके चहीते सब्जेक्ट थे। ये सिर्फ इसी वजह से हो पाया कि उन्होंने पूर्ण विश्वास रखा और अपने आप को उस फिजियोथेरापिस्ट को सरेंडर कर दिया। और हमें एक और बात का ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ करते जाएंगे और हमारे लिए रास्ता सरल बनाते जाएंगे। हमें भी अपने एफर्ट डालने उतने ही जरूरी है, हमें अपने कर्म को करना उतना ही जरूरी है। गोपीनाथ जी ने भी वही किया। गोपीनाथ जी अपना कर्म करते रहे और उन्होंने बहुत कुछ किया। आइए सुनते हैं उनसे आगे उन्होंने और क्या क्या किया। I gave back more than that to the management and the students. Wonderfully, wonderfully, I performed my duty. Not only with teaching, I was into sports activities, fine arts activities. I used to train students for intercollegiate competition, everything. Even in this condition, in the Mangala Stadium where there are 15, 16 steps to the platform, I used to be lifted up there. I used to even be an umpire for arm wrestling. They wanted to introduce arm wrestling. I said I drafted all the rules and regulations for arm wrestling, stole it from the American Arm Wrestling Association, and then deleted all that is not suitable for us, and then conducted it. I used to be a part of it. They used to honor me on the sports ground for the help or for the wonderful way in which I cooperated with them and shared my knowledge. So you kept yourself associated with sports. Sports all throughout, even now. Even now,
If I get a chance, I'll go and sit there. I'll go and sit there. That is in my blood. गोपीनाथ जी की जिंदा दिली तो देखिए, शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा काम नहीं कर रहा था, इसके बावजूद भी कॉलेज में शिक्षा तो दे ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अपने पुराने पैशन, अपने फर्स्ट लव यानी स्पोर्ट्स के साथ हमेशा ही जुड़े रहे। स्टेडियम में जाते थे और जो भी स्पोर्ट्स एस्पिरेंट्स थे उनको जाकर के मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे, गाइड करते थे, मेंटोर करते थे। यहां तक कि आर्म रेसलिंग कंपटीशन में वो अंपायर भी बने और इसके साथ साथ उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रेसलिंग के बना दिए। तो ये हमें यही सिखाता है कि हमें अपने पैशन के साथ अटैच्ड रहना चाहिए। जिंदगी हमारे तरफ बहुत सारी मुसीबतें डाल सकती है, लेकिन हम अगर अपने पैशन के साथ अटैच रहते हैं तो अपने आप उन मुसीबतों का सामना करने का हौसला, जज्बा हमें मिल जाता है। हम तो बिल्कुल सोच में पड़ गए थे कि किस तरह से गोपीनाथ जी ये सब कर पा रहे हैं, और इसीलिए हमने उनसे ये सवाल भी पूछा कि इतने सारे ऑड्स होने के बावजूद भी आपने ये जज्बा कैसे कायम रखा, ये जिंदा दिली कैसे दिखा पाए। तो उन्होंने हमसे ये कहा, I had no second option. Either I lie down on the bed with pressure sores and rot on it, or this is the option. So I chose this one. And so many things. When I was in the hospital, bedridden initially, a student of mine came and gave me a book. When bad things happen to good men, good people. So many such books and even quotations like which we learned in our younger days. Life is like a boxing arena. Defeat is not declared when you fall down. Defeat is declared when you refuse to rise again. So once so many people are around me to support me with all that I want, I have to give them back and do what best I can do. And this pushed me forward. I said, no, I will not betray you. I will not betray you. Whatever you expect out of me, I will do it. And I went on. And I have, after that, organized so many blood donation camps, blood donation camps, sports activities, visiting Cheshire homes, and arranging one-day program. I had friends who were with me to donate and finance and give all the uh, required vehicles and all. So I used to be a part of it. Old age homes. Even now, if chances come, I go there, give them a day's food and arrange programs there, sit with them, enjoy them. There are schools where there are uh, AIDS, children with AIDS. They don't mix up with them. We have programs there also. It's so nice to see them, small kids, work with them one full day, give them whatever they want. It's fun. It's fun. The best thing I do now these days are my doctors, neuro special surgeons, and ortho. Most of them call me once in a while. Sir, are you free? I said, yes. Where are you? I'm at home. Can you come down to this hospital? I said, yes. I don't ask why, what, and what. Because I know. They are my doctor. They know my condition. And they say, we have a patient. He is much well off than you. He's lower back injury, he has kick control. And one such was a doctor. And he refuses to get out of the bed, sit on the wheelchair, and do things what he could do otherwise. He said, done. Take the car immediately. She will put me in the car. I alone drive and go. You drive the car yourself? I have for the last 26 years a modified car which has got accelerated, brake and all, and everything on the hand. Initially, I have driven Bangalore long distance also within 7.5 hours with my children in the car. This is unbelievable, sir. I never had a second thought. Now I think if it were to be
tire puncture and all. Children were very small. What do I do? Blind. So I took this man in the car, took him around the city with heavy traffic everywhere, and then brought him back home. He asked me, "Sir, can you give me a number?" I asked him, "What else can I do? Can you give me a mobile number?" I gave him the number and came back. And straight away went to the doctor and said, "Sir, I did the job." What did he say? I said, He said, "Nothing." And he took my mobile number. Idiot. He must have been thinking next time he wants vegetables, he'll call you. But there are patients where they are mentally depressed because of the spinal cord injury. They don't see how to live forward. Such patients, it takes time. I am shifted to their wards. I meet them. First, one initially before my accident only, I was a counselor trained by HR department by 2 3 leading people. One Emma Gonsalves from she is no more now from Mumbai, from AIM Insights here, leadership training and communication skills. First day, second day, and all, I go to the patient near their bed, talk to them generally, slowly pushing them into the way I want them to live. The third day, he opened his mouth, or else he wouldn't say anything. He was a taxi driver. He met with an accident. Same T411. He had a car also. Finally, I said, "What else can I do?" He started crying and said, "Even to commit suicide, I need somebody else's help." That day I knew my communication skills have failed. But next day I went again and told him, and then he was a pleasant man. I heard again. For 3 days he did not say anything. All his problems I listened to, and then tried with my ability to find a solution for it, and how to modify the car, and then how to be on the road. You are a driver. Railway station to the bus stand only if you go 5 times. You will feel fresh. You are earning for yourself. You are not depending on others. He said, "Okay, I'll do." There are patients whom I go, doctors say, "We haven't even told them that it's going to be a permanent injury. Lifelong, you are going to be like a small young children, school children, road accident." I go there. While going, doctor said the whole family, and I said, "You also come." I took my wife also. He said, "Another hospital." As I entered, the girl she was a BCom student with 3 4 of her classmates from the college evening coming and saying cheerful, laughing, jumping. I told her to talk to her mother, say how to manage a spinal cord injured bedridden patient, what all problems are going to come. She went on talking to them. Her husband happened to be my student. So I told him, "Shall I tell her that it's going to be a permanent one?" He said, "Yes. Doctors have told me that you can proceed." Didn't he? By the time she finished talking to the mother, I slowly pushed my wheelchair and went near her bed. So the classmates, friends all slowly vanished. I started in a very nice way. But by the time I put it to her, saying that you are going to be like this throughout your life, she broke out into tears and yelling and crying and all. That her mother and husband came and find me. Even now, some people come and tell me what she is in the same condition. She has also started going out for treatment, and she used to call me and say, "Where did you get this kind of treatment?" I used to suggest my whatever I know about the medical and other things. I used to. She is also moving around now. There are patients, many patients. I go and tell them the visit. There is another way of living, not like this. No, sir, I don't want all those things. When will I be able to sit on a wheelchair and move? So finally, I come to physiotherapy, and that has made me till today, kept me fit
गोपीनाथ जी ने हमें एक बहुत ही गहरी बात आज सिखाई है। गोपीनाथ जी ने कहा कि उनके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता तो यह था कि बिस्तर पर पड़े रहे और जो घटना हुई है उसका विक्टिम बने रहे, और दूसरा रास्ता यह था कि जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया था उनको वो बिट्रे ना करें, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने ये कहा भी कि लाइफ इज लाइक अ बॉक्सिंग रिंग, वी फॉल डाउन बट दैट्स नॉट द डिफीट, द डिफीट इज व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप एंड फाइट बैक। गोपीनाथ जी ने कहा, मैंने यही चुना कि मैं फाइट करूंगा, और उसी में, जीवन की इसी घटना में उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य, पर्पस ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही जो एक्सीडेंट विक्टिम्स थे उनके पास जाते थे, उनकी मदद करते थे, उनकी सहायता करते थे, उन्हें काउंसल करते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे कि वो भी जीवन में वापस आए और एक नॉर्मल जिंदगी जिए। उन्होंने लोगों से कहा भी कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और अपना काम खुद करते रहें। और इस तरह गोपीनाथ जी ने अपने जैसे ही औरों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उनकी सेवा करना ही अपना लक्ष्य बना लिया और उसी दिशा में आगे काम करने लगे। लेकिन दोस्तों, ये जो उनकी आगे की जर्नी है, ये भी कठिनाइयों से घिरी रही। तो वो क्या कठिनाइयां थी और किस तरह से गोपीनाथ जी ने उनका सामना किया, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इसे आपके नजदीकी लोगों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है ऐसे लोग हों जो आज उसी परिस्थिति में हो जिस परिस्थिति से गोपीनाथ जी गुजरे हैं, और गोपीनाथ जी का जीवन देखकर उन्हें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल सकती है और उनका जीवन भी बदल सकता है। तो आप जब शेयर करेंगे तो आप किसी की मदद ही कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स आपके लिखिए कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे पार्ट 2 लेकर के, जिसमें गोपीनाथ जी ने एक न्यू वे ऑफ लिविंग किस तरह से होता है फॉर द एक्सीडेंट विक्टिम्स, इसके बारे में हमारे साथ बात की है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। नमस्कार।